गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एसपी क्लासेस रे आपन स्वागत। मो वॉइस समस्त सुबा जाउछि जने क्लैरिफाई करो एसएमएस देखि। वॉइस सुबा जाउछि। एनीबॉडी रमेश रमेश बेहरा वॉइस सुबा जाउछि एसएमएस करो। ओके स्टार्ट करबा। सो आज हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिसीजन जनरेटर चैप्टर डिस्कशन करछे। सो एवरीडे मु तुम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करबी। सो जो मु चैप्टर डिस्कशन करछी यूथ पब्लिकेशन र बुक जोडा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक एटा ओटे एथिरु क्वेश्चन र ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करबो आ नुआ जोडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हबो बा जोडा क्वेश्चन एग्जाम रे पकई परबा आसी पारे ताहाको मते मैं इंपोर्टेंट करते सब मार्किंग भी करके तो पढ़ी पारे जा पाखर बुक अछि भलो कथा यदि बुक नाही बुक टे मते परचेस कर दियो बहुत भलो बुक टे। ओके सो स्टार्ट करिवो। The main purpose of a commutator in a decision generator. So first of all things commutator हमें जो यूज करूचे कोथरे डिसीजन जनरेटर यूज करछे कोन पय हमें यूजेस करछे टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। यदि एसी टू डीसी हमें कन्वर्ट करिया पे हमें कोन यूज करछे कम्यूटेटर ऑफ यूजेस करछे। सो दैट आ कोन ऑप्शन में कोन देखिबा द मेन पर्पस ऑफ अ कम्यूटेटर इज डीसी जनरेटर कन्वर्ट इन एसी टू डीसी and the material used in commutator in a hadron. So commutator जो हमें material use करछे सेटा कोन कहउछे hadron copper कहउछे. So split ring are also known as a commutator. So commutator रो other name कोन कहउछे split ring बोली कहउछे कोन कहउछे split ring बोली कहउछे। For a DC generator commutator is known as mechanical. जदि हमें DC generator रे यूज करछे ताको हमें commutator कोन कहउछे अदर नेम रे mechanical rectifier कहउछे किबा rotating rectifier मध्ये कहउछे mechanical rectifier किबा हमें rotating rectifier मध्ये कहउछे। For a DC motor रे commutator is known as mechanical inverter or rotating inverter. जदि हमें DC motor हमें व्यवहार करबा commutator को त कोन कहा जबो mechanical of inverter or rotating of inverter. And a DC machine in a DC machine a number of commutator segment equal to the number of armature of a coil. Always remember that each point is very important question. ओके से ए जो डिस्कशन करली देखो ए जो क्वेश्चन एग्जाम रे पडितला सो वेरियस टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे हम एग्जाम करूचे से तो एग्जाम पडतला बट ता तळे जो पॉइंट देछि पॉइंट रे जोडा मो अंडरलाइन करबी सेट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा हाउ आर द इंटरपोल फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर हाउ आर द इंटरपोल ऑफ अ फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड। सो कोन होची इंटरपोल जो फील्ड कॉइल अछि डीसी जनरेटर से त केमिति कनेक्टेड रहै छै से देइ छै दैट इज आंसर कोन हबो हमर इन सीरीज विथ द आर्मेचर ऑफ वाइंडिंग। सो डीसी जनरेटर जो इंटरपोल ला सीरीज है कि का साथ लै छै ना आर्मेचर वाइंडिंग से त कनेक्टिविटी है कि रहै छै। ओके सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड पॉइंट को जिबा कोन देखियो त इंटरपोल कहले कोन बुझो इंटरपोल देखो मेन पोल जो हमर रहै छै जनरेटर रहिछि जनरेटर रे हमर मेन पोल रहिछि। ओके सो जो मेन पोल रीजन रे रहिछि सो एको आंक भितरे ए जो दिनसरा हम कोन रहितो इंटरपोल रीजन दैट मींस मेन पोल जतुटा मेन पोल इक्वल टू द इंटरपोल मन रखिथबो मेन पोल जतुटा रहिथबो इंटरपोल मध्ये सेतुटा रहिथबो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिबो नेक्स्ट पॉइंट कोन दैछि सो the interpole region the interpole field coil of a DC generator are connected. The interpole field coil DC generator connected केमिति ना सीरीज का से तो सीरीज कनेक्टेड थिबो ना आर्मेचर से तो सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग से तो सीरीज रे आर्मेचर से तो कनेक्टेड होय ना आर्मेचर वाइंडिंग से तो कनेक्टेड है कि थिबो। Hence the same current will be flow in the interpole
वाइंडिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन देखो जेतेबेले आर्मेचर वाइंडिंग सहित से कनेक्टेड विथ सीरीज रे थिबो आर्मेचर पे कोन हेतु ना सेम करंट विल बी फ्लो करंट सेम फ्लो करिवो बट द अपोजिट डायरेक्शन हबो कोन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन यदि मेन पोल रे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुए इंटरपोलर डायरेक्शन कोन हबो एंटी क्लॉकवाइज ऑफ डायरेक्शन हबो सो फर्स्ट पॉइंट द इंटरपोल इज ए स्मॉल पोल रिमेंबर दैट छोटा पोल लोग हमें कौन कहूचे इंटरपोल बोली हमें कहूचे सो नंबर ऑफ इंटरपोल इक्वल टू द मेन पोल एले कहिथिले नंबर ऑफ इंटरपोल इक्वल टू द मेन पोल इज द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो बाय दिस मेथड हमें काहे की इंटरपोल को हमें कनेक्टेड विथ सीरीज करूचे का से था आर्मेचर वाइंडिंग से था बिकॉज़ दैट by this method demagnetization and cross magnetization इफेक्ट को हमें एलिमिनेट करबा पई इंटरपोल को व्यवहार करछे सो जो हमें इंटरपोल को व्यवहार करछे बा इंटरपोल कनेक्टेड करछे आर्मेचर वाइंडिंग से तो सीरीज रे काहे कि ना डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ हमर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को एलिमिनेटेड करे पई सिंस इट इंप्रूव द जहा फल कोन हो कम्यूटेशन ऑफ इंप्रूव करबो कोथे इंप्रूव करबो ना हमारे इंटरपोल रीजन रे ही कम्यूटेटर ने जोड़े की कम्यूटेशन इंप्रूव करेबो ओके सो नेक्स्ट इज कोन पॉइंट देखिबा स्पार्किंग विल बी रिड्यूस इन ए कम्यूटेटर ऑफ सरफेस जतेबेले हमर क्रॉस कांटेक्ट से तो कम्यूटेटर आसे दैट मोमेंट ऑफ हम कोन थे स्पार्किंग हेथे तो जो सरफेस रे स्पार्किंग हेथाए से स्पार्किंग को हम कोन रिड्यूस करे पे बा सरफेस रे कमे करे पे हम इंटरपोल रीजन रे हम ऑलवेज मन रखितबो आ गोटे कथा हला जतेबेले में गोटे मेन पोल रोची मेन पोल केतेटा रे सपोज मोर मेन पोल अप चारिटा रहला ओके सो जो मेन पोल चारिटा रहला ता रीजन रे मोर कोन रहबो इंटरपोल रहबो ओके सो इंटरपोल रीजन एटा जो छोटो छोटो गोटे इंटरपोल आसीबो ओके नो एटा के साइज स्पेसेस अछि छोटे रे मु कर दोची ओके ए जो इंटरपोल रहबो ओके से इंटरपोल रीजन हम कोन रहबो कार्बन ब्रश रहबो ऑलवेज रिमेंबर दैट कार्बन ब्रश हमर क्रॉस मैग्नेटिज्म इग्रो केवल हमें स्टेट रहबो ना जीएनए पोजीशन रहबो ओके सेटा आगु हमें पढिबो और डिटेल्स में हम कहबे एबे हमें उति पॉइंट ऑफ जति इंपोर्टेंट सेति हम देखिनबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ समते जानि छे डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल काम करछ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो ऑल आर जेतो कॉम्पिटिटिव आ जो माने सब नुआ आसी छ से माने मोर थ्योरी क्लासेस अटेंड कर मो भी जनरेटर्स टॉपिक रो थ्योरी क्लासेस भी पढिबो तो कांसेप्ट और मते क्लियर हो जिवो सो निमिले बुक रो मुई केवल पढिबो अदर कोनसी सोर्स रो पढाय नै आ से बुक को सदा फॉलो करो आ एग्जाम रे बिफोर करे पूर्व ऑब्जेक्टिव को तमे टारगेट करो केमिति क्रैक करबो सो एवरी चैप्टर वाइज तमे पॉइंट करो मोर क्लियर करो सपोज मोर जनरेटर चैप्टर क्लियर हे गला देन जनरेटर चैप्टर जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो तन मु केतोरा अटेंड कर परबी एई पर प्लानिंग रे करके निजे कॉन्फिडेंस से तरह ओके तसे जते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करबो हमु ए जो क्वेश्चन जदी एबो 54टा केवल पेज हबो जनरेटर अछि मु जदी एबो मोर देन आपो 340 क्वेश्चन एबो अछि जदी 340 क्वेश्चन एबो जे कंसंट्रेट से जदी तुम बुझिला सुनिला ना तुमको कोनोसी बुक भी पढिया पड़िबो ना ओनली वन ऑफ द बुक ओनली वन ऑफ द सोर्स कहीं ना ए जो थ्योरी कांसेप्ट रा बहुत किछि जिंस देछि ओके नेक्स्ट को हम देखिए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction and it is used convert mechanical energy into electrical energy हम जानि छे सो आको कोन पे व्यवहार करा जाता है मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करिया पे according to Faraday's law electromagnetic induction we know that when a current carrying conductor placed in a varying of magnetic field and EMF will be induced of the conductor. That is the Faraday's loss level हम कहूचे. Okay. Next question देखिबा. If the variable losses of a DC generator is equal to the fixed losses, then which of the following statement regarding efficiency of the current that is maximum of efficiency? Always मन रखिथिबो variable losses equal to the fixed losses. केबे एला हमरा fixed losses equal to variable losses हबो नै एटा गलत अनलेस कोन हबो variable losses सदा हमरा रहबो कासे त इक्वल रहबो फिक्स्ड लॉसेस
भैरिएबल लॉसेस कहले कौन बुझुछ इट भैरिएबल लॉसेस कहले कॉपर लॉसेस बुझे सो फिक्स लॉसेस कौन बुझुछ आयरन लॉसेस बुझे सो जते हम लॉसेस पड़े से आयरन लॉसेस कौन कॉपर लॉसेस कौन डिटेल्स हमें जानिबा ओके सो नेक्स्ट टाइम आउट पॉइंट देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो भैरिएबल लॉसेस इक्वल टू द को लॉसेस हवा फिक्स लॉसेस हवा सो आर्मेचर मु तुम कहिथिले भैरिएबल लॉसेस टा को आर्मेचर कॉपर लॉसेस टा बा जतो हमें कॉपर लॉसेस जोट लागिवो दैट इज आवर भैरिएबल लॉसेस सो जदि हमें आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहूचे गोटे डीसी मशीन रे ताले केते परसेंट 30% ऑफ द टोटल फुल लोड लॉसेस यदि फुल लोड लॉसेस जति की थिबो तार 30% लॉसेस हला कहार आर्मेचर कॉपर लॉसेस किंतु फील्ड वाइंडिंग रे यदि कॉपर लॉसेस थिबो सो जदि हमें फील्ड वाइंडिंग रे कॉपर लॉसेस देखुचे हमें 25% थियोरेटिकली यदि हमें जानिबा थियोरेटिकली हिसाब रे 25% फील्ड वाइंडिंग लॉसेस रहउचे किंतु प्रैक्टिकली कहबा प्रैक्टिकली एडा हम कोन कांस्टेंट फील्ड रे कोन रूप हमरा चेंजेबल होय नाही सो ब्रश लॉसेस केते रहबो ब्रश लॉसेस इज ए 2 वोल्ट देछ बा 1 to 2 वोल्ट क्वेश्चन दे देता है 1 to 2 वोल्ट ये मतलब करेक्ट ओके आपको भी भूल भाबिबोनी सो अज्यूम करा जायथा हम केते 1 to 2 वोल्ट देन मैकेनिकल लॉसेस आप डीसी मशीन जोडे के हम आयरन बा फिक्स लॉसेस बोली कहउचे मैकेनिकल लॉसेस केते रहबो ना 15% ऑफ द फुल लोड ऑफ द लॉसेस रहबो ओके सो बुझि पाइलो समस्त ऑलवेज रिमेंबर दैट आयरन लॉसेस केते रहबो 15% आ जदि हमरा फील्ड कॉपर लॉसेस देबो केते परसेंट 25% थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली रहबो हमर कांस्टेंट जदि हमरा आर्मेचर ऑफ कॉपर लॉसेस देबो केते ना 30% ऑफ द फुल लोड ऑफ द करंट 30% ऑफ द फुल लोड ऑफ द करंट ओके नेक्स्ट पॉइंट को जेमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आउटर फ्रेम ऑफ अ डीसी मशीन एटा समस्त कहि परिबे यक टक हम आउटर फ्रेम ऑफ द डीसी मशीन बोली कहै किंतु ता भीतर आउ कोन पॉइंट रहउची आउटर फ्रेम ऑफ अ डीसी मशीन इज कॉल्ड एज यक वेरी गुड हम जानिले आ यक टा गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग बोली हमें कहउचे कोन कहउचे प्रोटेक्टिव कवरिंग बोली कहउचे सो इट सपोर्ट द मेन पोल्स एज वेल एज इन इंटरपोल जेहेतु गोटे मेन पोल गोटे यक रहउची यक टाइम दे रहउची ता भीतर कोन रहउची मेन पोल रहउची ओके सो मेन पोल रहउची आउ कोन रहउची ना इंटरपोल मध्ये रहउची मन रखथुवा कोन रहउची इंटरपोल मध्ये रहउची सो मेन पोल आ इंटरपोल को से सपोर्ट करे थाए के सपोर्ट करता है ना यक सपोर्ट करे थाए ओके आको कोन कहते यक बोले हम कहउचे so it provides the flux completion out मेरे क्वेश्चन आपको ये कौन ये प्रोवाइड करे फ्लक्स प्रोवाइड करे कौन ना कौन 5 by flux by 2 जोटे therefore yak should be good magnetic material so always हमर मन रखथियो yak इज ये कौन गोटे magnetic material okay so in a small DC machine जदि छोटा DC machine का हम देखिबा द yak कोथर तयारी थिबो ना कास्ट आयरन तयारी थिबो बट लार्ज साइज रे यदि देखिया पड़े त कोथर हेथिबो कास्ट स्टील रे हेथिबो एंड रोल्ड स्टील रे मध्ये हेथिबो कास्ट स्टील हेथिबो आ कोथर हेथिबो रोल्ड स्टील रे मध्ये हेथिबो सो नेक्स्ट पॉइंट को जिबा द मटेरियल यूज इन ए स्प्लिट रिंग मु कहितले स्प्लिट रिंग रो अन्ना को दिबो कोन कम्यूटेटर सो कम्यूटेटर टा कोथर ते जे हार्डन कॉपर रे तयारी छै सो मटेरियल कोन हेतो ताले निश्चित भाबरे कॉपर हेथिबो स्प्लिट रिंग को अन्ना ला कोन कॉपर रे तयारी छै the material used in split ring is copper okay split ring कोन होची copper बोली होची split ring are also known as कोन को जाउची commutator is very important question ए पॉइंट एना मतलब very important okay so split ring commutator is a rotating part of a DC machine split ring commutator को कोन कहची is the rotating part of a DC machine because that DC machine होची उड कोन हम rotating machine so rotate करते से पे हमें ताको मजे स्प्लिट रिंग जो यूज करूचे से स्प्लिट रिंग हमें कोन कहूची कम्यूटेटर बोली हमें कहूचे ओके सो इन ए डीसी मशीन number of a commutator segment are equal to the number of a armature of the coil so number of a commutator segment equal to the number of a armature of the coil कोथरे ना डीसी मशीन the main function of a commutator in a DC machine कोन change the AC voltage into DC voltage or DC to AC so DC to AC केतबेले हे परिबो जेतले मोटर हे लागिवो मोटर केसेस रे लागिवो DC to AC and generator केसे लागिवो कोन AC to DC because that कोन हेतो AC ला हमर आर्मेचर ओके जा फल रे कि कम्यूटेटर एडा DC ला हमर कोन कम्यूटेटर
कम्यूटेटर सो एड से हमर डीसी ला कम्यूटेटर एसी ला आर्मेचर ओके सेम वे भाबरे अल्टरनेटिव पर यूज करिया so DC generator commutator is known as a mechanical upper rectifier or rotating upper rectifier so for a DC motor commutator is known as a mechanical inverter जदि हमें DC motor को कहा जिवो mechanical inverter आ जदि हमें और mechanical inverter कहबा किबा rotating inverter मते कह परिया जदि हमें DC generator कहबा कहे परबो इन्वर्टर जोटा कि हम कौन दिया पूर्व टिके नाम कहथिले इन्वर्टर गोटे थिला आउट कोन थिला कन्वर्टर बोली गोटे थिला सो ए जो पॉइंट रो ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो क्वेश्चन केतले डाइवर्टेड करे दे पारे इट मी ऑलवेज रिमेंबर दैट मैकेनिकल इन्वर्टर एंड रोटेटिंग डीसी मोटर डीसी जनरेटर कोन कह जे मैकेनिकल रेक्टिफायर एंड रोटेटिंग ऑफ रेक्टिफायर जोटा कि कन्वर्टर बोली हम कहू ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट को जिबाबे रोटेशनल लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ जो हमें रोटेट जेहेतु मोटर रे हम कोन रोटेटिंग पार्ट रोचे सो रोटेटिंग पार्ट रोतो रे हमें रोटेशनल मतलब रोटेट होची रोटेट हला समय ना सम ऑफ लॉसेस विल बी अकर्स सो जो लॉसेस बाहर ताको हमें कोन कहूचे रोटेशनल लॉसेस बोली कहूचे इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट कहा पर कंसिस्ट है ओनली वन ऑफ द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जते बेले कोनोसी रूप हमर रोटेट होता है जिनसटा बा मशीन जते बेले हमर रोटेट होता है से समय कोन गोटे फ्रिक्शन होता है दैट इज अ फ्रिक्शन लॉसेस and another is windage of the losses so ए दीटा losses को हमें कौन losses बोली कहबा तो तुमको मु लास्ट रे ग्रुप रे मैसेज करैथली ओके सो से विषय टिके साला देखे दबा rotational losses in electrical machine consist of a friction and of a windage losses so friction and windage losses are कौन कहउचे mechanical losses बोली कहा जाता है mechanical losses को हमें कौन कहउचे friction losses और windage losses बोली कहउचे so losses in a rotating machine जदि गोटे रोटेटिंग मशीन देखुचे ते लॉसेस कोन रहउछ हम जानिबा गोटे होची कॉपर लॉसेस जडे को अदर नेम रे हमें कोन कहउचे वेरिएबल लॉसेस कहउचे और होची हमर आयरन लॉसेस अदर नेम रे हमें त कोन कहउचे कांस्टेंट लॉसेस बोले हमें कहउचे ओके सो दैट एबे जानिबा कांस्टेंट कॉपर लॉसेस कोन रहउचे ना कॉपर लॉसेस ए कॉपर वायर जोथरे राउंडेड कराई तो एटा कॉपर लॉसेस ता कोन आर्मेचर कॉपर लॉसेस आ कोते कि आर्मेचर कॉपर वायर अछि सो फील्ड कॉपर लॉसेस फील्ड में कॉपर वायर अछि सो लॉस ड्यू टू इन ब्रश कांटेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस सो ब्रश और मध्ये ओटे रेजिस्टेंस रहउछि जो रेजिस्टेंस रो जो कांटेक्ट रहउछि कॉपर ब्रशेस रहउछि आ हमर कोन रहउछि कार्बन ब्रशेस रहउछि ग्राफाइट ब्रशेस रहउछि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस मध्ये अवेलेबल रहउछि सो ब्रश रे ओटे लॉसेस बारे एटा मु कहथिले केता परसेंट 1 to 2 volt 1 to 2 volt of loss okay so iron losses or constant losses का बुझेबो ना iron losses हैला histosis losses आ कोन रहबो eddy current losses histosis losses and eddy current so last रे तुमको what losses कहछि that is called as a stray losses very important stray losses का कहबा ना iron losses plus mechanical losses जो mechanical losses ता कहउछे सेटा हला हमर कोन friction losses plus alcohol losses windage losses okay so very important समस्त जानि पाइलो losses पाले हमें का कहउछे जनरली कहय गेले losses इज टोटल किंतु समस्त कहउछे हम किंतु losses जानि लेते तीन प्रकार रो गोटे होचे copper losses बा variable losses second is iron losses or constant losses and third is our stray losses what is stray losses जतोड़ा iron losses plus mechanical losses एकट हे जिवे that is called as a stray losses what is iron losses ताले कोन iron losses है histosis losses plus eddy current of losses and mechanical losses कौन कहउची ना friction losses plus of windage of losses so next point को जिबा what is the electric of machine that converts mechanical energy into electrical of energy so हमें जानि से mechanical energy रो electrical energy को जे कन्वर्ट करबा त कौन कह दिबो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोली कहदिबो जदि एटा mechanical energy 2 into dc लिखि देथला dc लेट करथले dc लेट कर आ ac थिले अल्टरनेटर ओके आउ किछ नै सेति की इंपोर्टेंस ओके नेक्स्ट पॉइंट को जिबा if the series field turn are so adjusted that the full load of a terminal voltage is equal to the no load of the terminal voltage the generator is known as a dash generator से देछि कोन देखो सीरीज फील्ड देछि को फील्ड देछि सीरीज फील्ड टर्न और एडजस्ट हमें जहां भी आसुस कहां पर तो नहीं तो
को जनरेटर बोले हमें कहूचे सीरीज फील्ड हमें एटा निश्चित देखो सीरीज फील्ड turn are adjusted that the full load of the terminal voltage is equal to the no load of a terminal voltage. So FL is equal to NL. को केस रे ना सीरीज फील्ड केसेस रे सेटा कोन कहा जिवो दैट इज कॉल्ड एज अ लेवल कंपाउंड जनरेटर जेटा कि लेवल कंपाउंड जनरेटर कहा जिवो. सो हमें जानिबा टिके त कोन कहा जिवो इज नोन एज अ लेवल कंपाउंड ऑफ अ जनरेटर. So level compound generator कौन से सेट जानिबा level compound generator is used कोड व्यवहार करा होची short distance छोटो छोटो distance short distance रे notice load noted that कौन office building and because the loss of a voltage over a small length of the feeder is negligible. काहे कि जो लॉस हुए एटा बहुत कम लॉस हुए कोथर हुए level compound generator loss है very negligible. Loss is negligible. Okay, so over compound generator का कह दिबो ना over compound generator दा मु तुम कह देली series field level compounder मते series field over compounder मते series field under compounder मते series field से मते ampere turn ये मते ampere turn is rated load voltage गोटे ला load voltage is greater than the no load voltage जेतले लोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द नो लोड वोल्टेज से समय कोन होई जिवो ग्रेटर लोड वोल्टेज बढ़ी गेले ओवर होई जिवो सेमते लोड रेटेड वोल्टेज इज लेस देन नो लोड वोल्टेज कमी गेले कंपाउंड होई जिवो आ जदी इक्वल हे गला तले कोन होई जिवो एट देइची इज एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी हमर एट देइ देइची कोन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज हां इक्वल टू द ओके the full terminal voltage is equal कौन दे इक्वल कर दे इक्वल दे ना आखि बंद करके लेवल कंपाउंड जनरेटर पर पड़िबो ओके आउ किछि एक्स्ट्रा पड़िबा दरकार नाही. So in a DC generator the generated EMF is inversely proportional to the capacitor. समझ जाने तक Eg is equal to केते phi ZNP by 60. So inversely capacitor रहबो A से तो रहबो ए को हमें कौन कहछे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कहछे सो ए फाई को हमें कहछे फ्लक्स कहछे जेड को कौन आर्मेचर कंडक्टर कहछे एम को कौन कहछे स्पीड कहछे पी को कौन कहछे पोल कहछे ई सब कॉन्सेप्ट जानिया जरूरी काहे ईएमएफ इक्वेशन जो न जानिबा कर परबा नहीं. सो Eg is equal to generating EMF, n is equal to speed in rpm, p is equal to number of pole and phi is equal to flux in a pole and z is equal to number of armature conductor and a is equal to number of parallel of pole. Okay, so okay, next point of the हाँ now which of the following is defined as the stray losses एले मु कहतिली stray losses कहा को डिफाइन करू छी power losses in electrical circuit ना mechanical losses in core losses देखो एटा friction losses braking or friction losses in a commutator for air friction ना hysteresis losses eddy current hysteresis losses plus eddy current is a co losses कह दिबो ice color दपा iron losses. Okay, so mechanical losses core losses called as stray losses. Okay, so मैं से theoretic जाने दा कौन देसी mechanical losses plus core losses. So core losses है ला कौन का जो other iron losses. So mechanical losses है तो iron losses जो adding है ला तक का जो कौन stray losses बोले हमें कौचे. There are same uncountable losses. So ये दीटा का हमें कौन कौचे uncountable losses in a DC machine. DC machine रे जदि uncount losses कौचे कोड uncount losses that is called as stray losses. ये uncountable losses. को losses uncountable losses count करी हो नहीं से losses को. And the generator may lose its residual of magnetism. So generator कौन हुए ना residual magnetism जो loss करे कौन loss करे ना it means जदि हमें idle condition रखी दवे हवा short circuit करले भी हवा overloading देले भी हवा and subject to it be subject to much in heat अधिक गरम कोले मतलब हवा कौन हवा residual magnetism of losses कमी जीवा जाको कौन हो all of the above will answer. Which of the following is not a condition of a parallel operation? तो आको तो parallel operation condition कोड में जानी जला आरडा हवा नहीं same percentage yes voltage regulation same percent रहेगा voltage rating है same रहेगा but operating temperature हवा नहीं के पहले percentage of speed regulation prime over मतलब same prime. Okay, so next point of कुछ हुआ a DC generator
हाँ अब देखिए कौन कौन देइछि सेम जिंस किछ आ देइनि जति पैरेलल कंडीशन जो तीनटा से तीनटा जिंस एटे मेंशन करे दैछि सो ए डिसिजनेटर यूज आर्क वेल्डिंग सो आर्क वेल्डिंग पई को डिसिजनेटर यूज करा जाउछि एतिकटा मन रखते दरकार को डिसिजनेटर यूज करा जाउछि डिफरेंशियल ऑफ कंपाउंड डिसिजनेटर यूज करा जाउछि को यूज करा जाउछि ना आर्क वेल्डिंग पई जो डिफरेंशियल कंपाउंड रहउछि that is our dropping characteristic or other word कौन नेगेटिव वोल्टेज मन रखथियो नेगेटिव वोल्टेज dropping characteristic or negative of voltage so in a differential compound generator जोटा कि हम यूज कराउछ कोठे आर्क वेल्डिंग पे यूज करा जाउछ सो शॉर्ट जनरेटर कोड यूज कराउछ बैटरी चार्जिंग के सीरीज जनरेटर कोड यूज कराउछ बूस्टर पे एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कोड यूज करा हम जानले दी प्रकार जनरेटर गोटे होची डिफरेंशियल जनरेटर और होची क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर सो क्यूमुलेटिव और मते डिवाइड करा छै शॉर्ट सन क्यूमुलेटिव लॉन्ग सन क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल को मते डिवाइड करा छै शॉर्ट सन डिफरेंशियल लॉन्ग सन डिफरेंशियल ई पूरे पूरे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कहार जनरेटर हम जानि परिबा सो क्यूमुलेटिव हला कोन लैंप लोड हो एंड हेवी पावर सर्विस सच एज इन इलेक्ट्रिक रेलवे रे हमें ये कौन यूज करा छै क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज करा छै सो क्वेश्चन रे एटा आसीर वेरी वेरी चांस है इलेक्ट्रिक रिले रे हमें कौन को टाइप ऑफ जनरेटर व्यवहार करा छै ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर ए डिसिजनेटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर ए डिसिजनेटर रे कौन रिलेशन शो करछे फॉर कहार कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सो एक्सटर्नल कैरेक्टर हमें केतडा कैरेक्टरिस्टिक अछि गोटे होछि हम इंटरनल आउट होछि हमर एक्सटर्नल आउट होछि ओसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सो हमें जेतले एक्सटर्नल सहित कैरेक्टरिस्टिक जानि कहा कहा मध्य कराथो एक्सटर्नल सदा मन रखथो एक्सटर्नल माने बाहर इंटरनल माने भीतर ओके सो टर्मिनल वोल्टेज आउ का सहित लोड करेंट सहित हमें यूज करछे टर्मिनल वोल्टेज आउ लोड करे एक्सटर्नल जनरेटिंग वोल्टेज एंड फील्ड करंट दैट इज कॉल्ड ऑफ इंटरनल मन रखिथिबो एटा से से आउट जानि जबा तीनटा जिंस कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक ओके एटी देखो the curve of a show in the terminal voltage आकार लोड करंट यदि टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट हला ताको एक्सटर्नल यदि हमरा कहा भीतर अब जनरेटेड ऑफ ईएमएफ कहले ले जनरेटर ऑफ ईएमएफ ऑन लोड और आर्मेचर करंट यदि अब हमरा कार इंटरनल हवा और ओसीसी कौन ओपन सर्किट हला नो लोड E0 एंड फील्ड करंट IF सबुटर इंपोर्टेंट क्वेश्चन नो लोड वर्सेस नो लोड वर्सेस का था अब फील्ड करंट हला जेमति कि नो लोड वर्सेस फील्ड करंट से था हमर ये सेंति का था अब EG बाय IA और V बाय IL सो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम पढ़े बे जेबा which one of the part of a DC generator is used spread out the flux in the air gap so को part of a DC generator हमें व्यवहार करछे spread out of the एटा वेरी सिंपल कोन यूज करछे पुल स्विच को हमें व्यवहार करछे पुल स्विच of a DC generator is used spread out the flux in the air gap uniformly ततळ हमें पोल स्विच टा कोड कनेक्टेड एक थाई रे पोल कोर से तो कनेक्टेड एक थाए पोल स्विच अटैच्ड टू ए पोल कोर मन रखिते pole switch is attached with a pole core by means of a counter snug screw by the help of a counter snug screw माध्यमरे pole switch are fixed at in a pole core बुझि पाइला so pole switch is made up of कोथरे pole switch ता तयारी छि कास्ट आयरन रे तयारी छि जेहेतु मोर कास्ट आयरन होछि फ्रेम वर्क कोर नाम द कास्ट आयरन सेतबे स्विच नाम द मोर कास्ट आयरन मते रहइबो ओके एंड कास्ट स्टील मते बड़ बड़ जागा तळ लागिवो कास्ट स्टील मते हेई पारिबो सो पोल स्विच इज लैमिनेटेड पोल स्विच ता कोन हेता लैमिनेटेड हेता कोन पे लैमिनेटेड हेता टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस एग्जाम रे जदि केताले लैमिनेटेड रो क्वेश्चन पचारे त तमे डायरेक्ट रिड्यूस द एडी करंट ऑफ लॉसेस को हमें रिप्रेजेंटेड करेबा ओके so next है pole source provided mechanical support to the field winding so pole source टा कोड पे प्रोवाइड करछे mechanical support to the field winding कर दैछे and it distribute the magnetic of a field uniformly to the air gap so जो
ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଦବ ୟୁନିଫର୍ମଲି ହବ କେମିତି ହବ ନା ୟୁନିଫର୍ମଲି ସାଇଜ ରେ ଏୟାର ଗ୍ୟାପ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲୋ କରାଇବ ଫୋର୍ସ ସୋର୍ସ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇଥାଏ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖୁଥିବ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଫୋର୍ସ ସୋର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ and it provide a low reluctance ଏଇଟା क्वेश्चन ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବି ସो ବାରମ୍ବାର क्वेश्चन ରେ ପଚାର जो फिर पोल शूज अच्छी पोल शूजटा रिलक्टेंस है कौन वेरी लो एंड द फील्ड फ्लक्स बात फॉर ए फील्ड फ्लक्स जा पे वेरी लो रिलक्टेंस थाए 17 नंबर देखिबा कोन देछि एन आइडियल देला माने आखि बंद करी जीरो मार दबा किछि देखिया दरकार नहीं सो कोन देखिया थ्योरी से डिस्कशन करिया आइडियल डीसी जनरेटर इज वन दैट हैज ए जीरो वोल्टेज कोन जो वोल्टेज रेगुलेशन व्यवहार କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଇडिଆଲ ରେ ସो ଭୋଲ୍ଟେଜ ରେଗୁଲେସନ କଣ नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय फुल लोड वोल्टेज बाय एनएल माइनस एफएल बाय एफएलए ओके एति मन रखिथिबो ओके सो शंट जनरेटर इज ए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन शंट जनरेटर इज ए को रेगुलेशन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन बट सीरीज जनरेटर इज ए को वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन देखो जो माने ओएसपीसी और यूपीडीसीएल एग्जाम दबो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार मन रखिथो ए क्वेश्चन परिवार बहुत चांस अछि सो जनरेटर जो शंट जनरेटर कहउछे हमें पॉजिटिव और सीरीज जनरेटर जो कहउछे हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन सो ऑर्डरली हमें जब देखिया जिबा सीरीज इज ग्रेटर देन ऑफ डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन ऑफ ओवर कंपाउंड इज ग्रेटर देन ऑफ शंट and salt is greater than a card separately a compound and separately is greater than a flat compound এই মেথড কোন না কি কার্ড रो अधिक पावरफुल कोते वोल्टेज रेगुलेशन रे बुझ पाइला सो अधिक वोल्टेज रेगुलेशन कोते रहे ना सीरीज रे होय कोते रहे थे सीरीज रे थे आ कम कोते रहे थे ना फ्लैट कंपाउंड ऑफ जनरेटर रे थे सो नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर समस्त बंद करी कह देबे कार्बन ब्रश सो ब्रश करूचे हमें नॉट एनी कार्बन ब्रश से कॉपर ब्रश हो किसी हमर कोन ग्राफाइट ब्रश हो कॉपर ब्रशेस कोन पे यूज करा होची ग्राफाइट ब्रशेस कोन पे यूज करा होची से विषय हमें ठीक जानि दबा जेतला हाई करंट दरकार पड़िबो सेतलो कॉपर यूज करबा जेतला हाई वोल्टेज दरकार पड़िबो सेतलो हम ग्राफाइट यूज करबा किबा लो करंट जेतला से सेतलो हम ग्राफाइट ब्रशेस मध व्यवहार करबो so carbon brushes collect from the current from the commutator in a DC generator. Brushes is a stationary part of a DC machine which is the collect the current from commutator of a DC generator. So collect the current from the commutator of a DC generator. So in a DC motor, brushes are used to provide a DC current to commutator from in a DC supply. Brushes ta kon pe व्यवहार करा to collect the current from in a commutator. So carbon buses are used in low capacity of a machine. Carbon bus code व्यवहार करछि low capacity graphite buses code यूज करछ high voltage and copper buses यूज करछ गोटे low voltage or high current and high voltage and low current. Always remember that. In a lap winding the number of parallel path lap winding number of parallel path केते हो A is equal to P होबो सेमते आउट केतेरा पॉइंट मन रखथिबो so the back pitch and front pitch are odd so that is simplex रे odd रहबो आ simplex lap winding simplex wave winding मध odd रहबो but cannot be equal किंतु इक्वल हेबे नहीं ये कह जो वेव रे is same sign odd and same sign ये इक्वल के हेबे नहीं cannot equal कोत रहबे नहीं lap winding but ये same है so both YB and YFS should be nearly equal okay so both YB front pitch and back pitch is equal to nearly equal not equal nearly equal to pole pitch okay and resultant pitch kon habo resultant pitch hela YR is equal to YA plus in YB that means of back image jodi eta question pacharibo YF kon habo front pitch kon habo निश्चित एटा YR रे पडु पडले प्लस पडले पडु कोन माइनस ओके सो ये जेतले YF टा एपडु क्रॉस